Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have with me Dr. Ebaidulla. He completed his MBBS from Silchar Medical College. He's a 2014 batch MBBS graduate, completed his internship at the end of 2019, post which he did his rural, 1 year rural compulsory rural posting, and that completed in May 2021. Post May 2021, just like many post interns, he finally picked up his books, his gears to prepare for this humongous task called as NEET PG. Gave his first attempt in NEET PG 2021, proper one. And in NEET PG 2022, he has got a really good rank of 3,750. And in NEET PG 2021, he had gotten a rank of 29,000. So he improved drastically within a span of 6-7 months. And he's here to share his story. One of the reasons I'm making this video is that whenever Rishabh make a video with any other toppers, people keep on telling me कि आप सिर्फ टॉपर्स के साथ वीडियोस बनाते हो, आपको थोड़ा एवरेज स्टूडेंट के साथ, किसी पोस्ट इंटर्न के साथ, जिसका थोड़े वीक है कंसेप्ट, उसके साथ वीडियोस बनानी चाहिए, कि उनके एक्सपीरियंसेस से हम क्या सीखें. So I was like, yes, I should. That's definitely true. So I wanted to congratulate. First of all, congratulations, Ebaidulla. You got a really good rank, and now let's hear it from him. Now let's hear it from Ebaidulla. What was his preparation strategy after his rural posting ended in May 2021, and he had first 4 months to give the exam, and then after that 6 months to give another exam, and how he managed this humongous task of clearing NEET PG and got this really good rank of 3,700, and what we can learn from his journey. Over to you. Yeah. First of all, thank you very much. I am a regular follower of your channel. Yeah, thank you so much. I am a regular follower of your channel actually, and it's a privilege being on this channel. Okay, and this thing I heard about first aid from your channel only actually, and I used it in my preparation. Okay. Thank you. So thank you. Yeah. So I was never a serious student in my MBBS years actually. I just used to study some things before the professional exams and used to pass. Internship also, the duties were hectic, so I could not study. But I got Marrow at that time because all my batchmates were getting Marrow, so I also subscribed to Marrow. But I could, so I did not study actually. Time ही नहीं पाया, मतलब enjoy करना था internship basically, तो I did not study. उसके बाद rural posting में COVID आ गया, तो I was not able to study. लेकिन थोड़ा I tried a bit, so I did just the general pathology and hematology from Marrow. That was it. So after that, when my rural posting ended on May of 2021, so my Marrow subscription also got ended. So then I thought कि यार Marrow से तो नहीं हो पाएगा, मतलब इतना vast है, और NEET PG was just 3 months at that time, 3 months away. तो मुझे प्रेप लेटर के बारे में सुना था, तो मुझे प्रेप लेटर लेना था, लेकिन दैट ऑल्सो कि नो वन हैड प्रेप लेटर इन माय कॉलेज, तो आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि मतलब प्रेप लेटर लूंगा तो कैसा होगा. तो एनीवे आई got prep letter subscription, and then after getting prep letter subscription, the prep letter is also not that concise, it's also pretty vast. So I decided to go for prep letter rapid revision कि मतलब ये तो हो पाएगा, मतलब 3 months में this should do. तो I started doing prep letter rapid revision. तो मैंने वीडियोस देखा, फिर I ordered prep letter notes, जो मतलब rapid revision का notes वो लोग हार्ड कॉपी भेजते हैं, तो I got that, and then I started preparing from that. तो मेरा प्लान ये था कि I will do rapid revision and I will give 2021 NEET, and after that I will do the regular prep letter videos. So I did rapid, but also I did not do the whole rapid revision because rapid revision is also not that concise. Okay, so for example in pediatrics I just did the neonatology part because systemic medicine से हो रहा था. Then ophthalmology I did not do the videos, I just watched the image discussion video. Prep letter has separate snapshot videos. Okay, and I did that and I revised those like 2-3 times before the 2021 exam, and I got a rank of 29,000 in 2021 exam. So that was a huge thing for me because I just studied for 3 months, very few things, and I got a 29k rank. So that was a real confidence booster. After 2021, then again they decided the date to be 12th March. So then again I had just 5 months. So I thought कि नहीं, अभी भी वो नहीं, मतलब regular नहीं कर सकता videos में. So then again I started the rapid revision, the things I had left, I did those, and with those I give GTs.
And from GTs, I realized that there are some things that are not in repeat revision. There are some things that I need to focus on. So I added some more things. And at that point, I came across your video, The Secret Weapon of Amazonians. So then I decided to get the repeat revision. Sorry, First aid. the first aid. Okay, I got first aid, and that's such an amazing book actually. I mean, I was amazed. I did not know about this before. So I did some things from a first aid. Like in pathology, the coagulation and clot formation in pathology, they are given really well. In one single topic, one single page, you will get the, first of all, the mechanism of the process, then you will get the diseases, then you will get the drugs acting in just half a page, I think. Yeah. Then in biochemistry, the big cycle that you always talk about, and the vitamins I did exclusively from first aid. And in some other subjects also, the psychiatry especially. Psychiatry, there are I think 8 to 10 pages where the diagnoses are given really well and really beautifully actually. If you study from that, you will never miss a diagnosis from psychiatry actually. And then when DAMS DVT came out, I did 3-4 subjects from DAMS DVT, like obs and gynae. It's really good in DAMS DVT. Then anesthesia and ophthalmology also, I did from DAMS DVT. Like I did from repeat revision, these were additional. Okay. Mention one thing, with prep letter repeat revision, I also got the prep letter main notes. So what I was doing is, I was studying from prep letter repeat revision. Whenever I had problem in some topic, I used to read the main notes. In prep letter main notes, the notes are in details actually, not point wise, and there are no blank spaces. So you can read and understand from that only. Like most of the times my doubts used to get solved. And then if from there also I was not able to understand something, then only I watched some videos. Yeah, I think this is where your effort theory video comes into play, that I watched yesterday. Yesterday, after watching your video, I realized that I was using this only, effort theory. Okay, so after that also, I was really weak in microbiology. So, and also I had not done systemic pathology, because I did systemic pathology from Marrow, the general, and hematology. Yeah, hemat. So I came across Dr. Preeti Sharma of Unacademy. Like I watched one of her videos in YouTube, and she teaches really concisely and really well. So I decided to watch her videos. So you don't even need to get an Unacademy subscription. There are her free sessions called Kickstart Morning Sessions. You can cover micro and most of patho from there only. And she taught mycology really well. And this year there were a lot of questions from mycology. Okay, I did not miss one of those. I got all of them correct, just because of Preeti ma'am, I would say. And also I watched a lot of Nikita ma'am's videos. Like she gives really beautiful mnemonics. Yeah. And mnemonics not like ABCD and all those. She will give mnemonics like Govind Rai Garg sir. Like Govind sir, he gives mnemonics from the drug's name only. So Nikita ma'am also gives same type of mnemonic. Okay. Also I did pharmacology not from rapid revision videos. Pharmacology I did from prepared main notes. Okay. Because they ask a lot of questions from pharmacology. And Govind Rai Garg sir's notes are really concise in main notes only, and he gives so well mnemonics. I mean, I got. So a lot of people don't know this, that I attended Dr. Govind Rai Garg's. वो हमारे टाइम पे एमबीबीएस की प्रॉपर क्लासेस लेते थे. तो मेरी ना सेकंड प्रॉफ में यूएसए में जो मेरी ट्रिप थी, रिसर्च इलेक्टिव था, वो आ गया था. नहीं तो मैं वो पूरी क्लासेस अटेंड करने वाला था. आई अटेंडेड हिज क्लासेस फॉर 1 month. Absolute gem of a teacher. Like absolute gem of a teacher. I will always, very frankly, I'll say that I keep on recommending Kaplan Pharma ki Lionel Raymond की videos. He is amazing teacher, Dr. Lionel Raymond Kaplan के. But उनके बाद अगर कोई एकदम बंदा जो एकदम एक इंडियन सिनेरियो के लिए परफेक्ट है ना, गोविंद राय गर्ग से बेटर कोई हो ही नहीं सकता मेरी फ्रैंकली. Especially because of the way he teaches, you know, concise भी है, conceptual भी है, और mnemonics भी है. तो सब कुछ ही हो जाता है. सर के वीडियो देखने में कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है क्या, मतलब इज इट सो इजी, मतलब सच तो कुछ मैकेनिज्म सर ऐसे समझाते हैं कि मतलब लगता है कि मुझे एक्चुअली समझ में आ रहा है क्या, मतलब इतना इजी कैसे हो गया ये, ऐसा लगता है. तो मैंने सर का वो देखा रिकॉल वीडियोस, तो आई गॉट 22 out of 23 क्वेश्चंस करेक्ट, और एक जो हुआ वो भी मैंने वो PCSK9 इनहिबिटर एजेटिमाइड मार दिया, मतलब वो सिली मिस्टेक था.
So basically your strategy was basically that you focused on rapid revision कि rapid Yeah, revision yeah, मैं yeah. करता रहूंगा. साथ में what you did was you started taking grand test. These grand tests made you realize कि अच्छा rapid revision से थोड़ा extra मेरे को क्या करना है, क्योंकि rapid revision तो बहुत ही distilled down हो गया, Yeah, एकदम yeah, yeah. concise and precise हो गया, तो थोड़ा extra क्या करना है to improve my rank. तो वो grand test से तेरे को अपनी weaknesses पता चलती रही, and for that you used resources which you again focused कि वो concise और revisable हो. Concise, तो जहां से मुझे concise मिला मैंने वो किया. work, yeah. So path micro, you felt that Dr. Preeti Sharma from Unacademy teaches concise and precise, so you use that. Dr. Nikita Nanwani teaches concise and precise, you use that. And Gobind Rai Garg you felt was concise and precise, so you use that. So in a way that your base was prep ladder's rapid revision, and उसमें जो Yeah, add yeah. करना था वो तूने ग्रांड Yeah, टेस्ट yeah. प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन से तेरे को पता चल गया कि क्या क्या एक्स्ट्रा तेरे को ऐड करना है हाँ हाँ हाँ. रैपिड रिवीजन में, एंड वो तूने जो जो जहां से Actually, just yeah. So when I started preparation, before starting the actual preparation, what I did was I researched. I did a lot of research. Like I couldn't do PYQs because I had basically zero knowledge. So how could I do PYQs? So what I did was I downloaded a lot of, there are PDFs in Telegram of previous year's topics. There is one in Nikita Nanwani ma'am's channel. Ma'am has made it. There is one in Abbas Ali sir's Bone Teacher channel. There is one PDF. तो वहां से मतलब previous year's topic मिल जाता है. फिर और भी PDF है ऐसे अवेलेबल जहाँ पे important topics है. फिर मैंने YouTube videos भी देखा कि मतलब what are the important topics. तो before starting the preparation only I had in my mind कि मतलब वो printed था मेरे mind में कि मतलब these are the topics which are important. topics देखने के बाद ही मुझे पता चल रहा था कि ये नीट में आता है, ये तो नहीं चाहिए नीट के लिए. तो वो मतलब वो तेरी बेसिकली एक क्या कहेंगे, वो तेरी विजन टनल्ड होगी, तुझे पता चल गया कि ये सब चीजें हाँ ये सब कुछ बकवास है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिकॉज ये बताया हुआ है, पीडीएफ में बताया हुआ है. और अगर कुछ लगता था कि अरे ये टॉपिक थोड़ा वीक है, ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा, उसकी वीडियो देखी और उसके लिए थोड़ा मेन नोट से ज्यादा देख लिया या वो सब कर लिया. बट और वो भी देख लिया तो मतलब पॉइंट्स आई यूज्ड टू ऐड इन रैपिड रिवीजन ऑन रैपिड रिवीजन रिवीजन तो उससे ही करना है, मतलब उससे ही करना है. बेसिकली यू मेड एक ही श्योर दैट जगह यू में. हाँ, so basically you made sure that you had one concise and precise source for revision, और तूने रैपिड रिवीजन को ही वो रिसोर्स बनाया और उसमें बस चीजें ऐड करता गया. जब ग्रांड टेस्ट से कुछ पता चला या तेरे जो ऑलरेडी पीडीएफ थे प्रीवियस टॉपिक्स था उससे पता चला, प्रीति शर्मा की लेक्चर, डॉक्टर प्रीति शर्मा के वीडियोस, डॉक्टर निकिता नानवानी और डॉक्टर गोविंद राय. या और मैं ये करता था कि मतलब सम थिंग्स कि यू कैन नॉट ऐड इन रिपीट रिवीजन बिकॉज देयर आर नॉट स्पेस, सो आई यूज्ड टू मेक सेपरेट नोट्स. और प्रीति शर्मा मैम का अगर मतलब मैं आई यूज्ड टू डाउनलोड पीडीएफ ओनली, मतलब अनअकैडमी से यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द पीडीएफ, तो वो डाउनलोड कर रख देता था. बाद में मतलब यूज्ड टू रिवाइज फ्रॉम दैट ओनली. तो मतलब जहां से जो किया था वो था मेरे पास टू रिवाइज. सो बेसिकली यू प्रिपेयर्ड योर एंटायर थिंग कि इस चीज ये ऐसे ऐसे कर लो ताकि मैं फिर रिवाइज अच्छे से कर पाऊं. बिकॉज मेरे 2021 एग्जाम देख के मुझे ये पता चल गया था कि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होना. बिकॉज आई डिड 2 to 3 रिवीजन्स of what I studied before 2021 exam, and in exam I realized कि मतलब I know this, okay, I have studied this, but I could not pinpoint the answer. Okay, but it's nitpick is all about accuracy, and that accuracy to you will easily rule out 2 options, but to make mark the correct one of the remaining 2, you need revisions. You need a lot of revisions. 2-3 revision से कुछ नहीं होगा. So this brings me to the one thing that what is one thing that you will want to tell the aspirants? You said something on your post. Yeah, I had made a Facebook post which unfortunately got deleted. I had mentioned in that post that fast reading is a scam and 2-3 revision is a lie. So let me explain. Explain, because this is something which is first reading is scam, 2-3 revisions is a lie. लोगों को जमेगा नहीं, तो explain your viewpoint एक बार अच्छे से. Yeah, so if you are studying from undergraduate and all, it's okay, you can go for vast resources. But मेरा जैसा अगर हो कि मतलब 1 साल है पढ़ने के लिए, टाइम कम है, तो if you go for like whole Marrow or prep ladder, there are 700-800 hours of videos. You will watch those videos, it will take you 4 to 6 months, and you will really understand those things. You will be like, wow, these things are so easy, so beautiful, I am understanding everything. But at the end of your fast reading, you will forget everything again, to the point that when you are revising, you will need to go back to videos also. Okay,
And then during revision also, you will think you will revise fast or you will revise just the important topics, but you won't be able to do that because you will have FOMO कि मैंने अरे यही तो ये पढ़ा था अब कैसे छोड़ दूँ. So you will try to revise everything, and then when you are done with 2-3 revisions, exam will be there. So you won't be able to revise. तो पढ़ लोगे बहुत, but exam में तुम कर नहीं पाओगे. कुछ नहीं कर पाओगे. कुछ नहीं कर मतलब पाओगे. और उसका कोई फायदा नहीं है. मतलब इतना सब पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर रिवाइज नहीं किया, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया, लाइक यू सेड, तो वो एक्यूरेसी किसी हालत में नहीं आ पाएगी. बस पता होगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन हाँ देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, पर आंसर मार्क नहीं कर पाओगे. आंसर मार्क नहीं कर पाओगे, वही. और रिविजन मतलब लोग, मैंने देखा है कि वीडियोस में लोग बोलते हैं कि 6 महीने में एक बार पढ़ लिया, 3 महीने में एक रिविजन, 2 महीने में एक रिविजन, एग्जाम हो गया. नहीं होता है. तो मैंने मतलब मेरा सॉरी मेरा ऐसा था कि 2021 के पहले मैंने जब पढ़ा था, that was my main. So each time I was adding something new. For example, when I started first aid, I added some things from first aid or studied some things from first aid. When I was Preeti Sharma's videos, I was adding some points from her or making notes. But every time the initial notes that I had, that was getting revised each time. Revised again and again and again. Again and again. So my core things, I think I don't know, maybe 7, 8, 10 times. I forgot actually how many times I have revised. So that main thing I had revised a lot of times. And in addition to that, what I was adding, those things got revised less. But the core thing, I revised multiple times. So would you say that revision in last 1 week to 10 days is really important? Yeah. I did that actually. So I got a little distracted during the postponement saga. So after that, first of all, I did a whole revision. Like I had very concise material, so I was able to do one revision in, I think, 10 to 12 days, I guess. After that, I did another revision, just a flip through. Like for example, you are flipping through something, you know exactly where you like, what you need to revise again from that, what you forget. If you are going through something, surgery में you are going through one topic कि मुझे सिर्फ वो investigation of choice और वो treatment of choice देखना है, तो वैसे मैंने flip through किया फिर again in 5 to 7 days. Then in last 4 days मैंने रिवाइज होल फार्मा, पूरा फार्मा मैंने रिवाइज किया, पूरा माइक्रो रिवाइज किया. ओके, उसके बाद मैंने वोलेटाइल है एग्जाम में, यू हैव टू फील लाइक कि मतलब अरे ये तो कल ही पढ़ा था. मतलब क्वेश्चन देख के यू हैव टू हैव दैट फीलिंग कि अरे ये तो कल पढ़ा था, लाकीली आज आ गया. मतलब वो तभी पॉसिबल है अगर आखिरी हफ्ते में रिवाइज करके जाओगे, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल. सो या आई रियली लाइक दिस लाइन ऑफ योर्स वेरी फ्रैंकली अब्दुल्ला कि फर्स्ट रीडिंग इज अ स्कैम, 2-3 रिविजन्स इज अ लाई. जेन्युइनली मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, बिकॉज दिस इज ट्रू. मतलब लाइक यू सेड, अगर आपने एमबीबीएस में रिसेंटली पढ़ाई की है, लाइक आई वाज समवन हु वाज वेरी मतलब I was someone who was in the top 10-15 of my MBBS. So for me, maybe first revision was not a lie. And I did what you said. I did 6 months, 3 months, 2 months, 1 month and a final 1 week revision. अगर लेकिन इनको भी तू काउंट करेगा तो टोटल नंबर ऑफ रिविजन 4 हो जाएंगी. So even if you count, it is not 3 revision, it is 4 revisions. Even I will become like कि I would be able to do 4 revision. तो वो 4 revisions हो जाएंगी. But people tend to forget कि मेरी जो सबसे पहली रीडिंग थी, बहुत बड़ी रीडिंग, I have done it over the पूरी MBBS में over 3.5 years, 4 years. So वो important हो जाता है. But for someone who's starting from zero, जो एक intern है या post intern है, और like you like say, there are many people जिन्होंने अपनी MBBS have not studied that thoroughly, but obviously they want to crack the PG exam. उनके लिए obviously the first revision, what people say the first reading, that's a scam. And you would require multiple revision, and obviously like you said, they should also focus on content and prepare for content which is easily revisable again and again and again. Yeah. Actually क्या होता था, even I used to give GTs. Okay, so I had prep leader, but I used to give prep leader GTs initially. Then 3 months before exam, I got Marrow subscription plan B to give GTs, because my friends were giving Marrow GTs, so I could not compare myself with them. I am getting this much in prep leader, they are getting that much, so how आइडिया लगना चाहिए ना कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, कहाँ पे स्टैंड करता हूँ इधर से. तो इसीलिए मैंने Marrow लिया. तो Marrow में भी ऐसा होता था, देयर वर 2 kinds of GTs in Marrow. कुछ GTs में ऐसा होता था कि मतलब क्वेश्चंस वर टफ, जिसमें यू नीडेड मोर नॉलेज. उन GTs में मेरा रैंक कम आता था. लेकिन जो GTs थोड़ा इजी थे फ्रॉम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो पीजी को अप्रोक्सीमेट करेंगे, हाँ, जिसमें एक्यूरेसी, मतलब यू डिडंट नीड मच नॉलेज बट यू नीड मोर एक्यूरेसी, उसमें मेरा ज्यादा आता था. And this
दिस एनेक्डोट ऑफ योर्स रिमाइंड्स मी आल्सो। तो मेरे साथ बताऊं क्या होता था कि मैंने बहुत जीटीस तो नहीं दिए, बट आई विल जस्ट टेक समथिंग लाइक दिस कि मैं हमारे अभी भी जैसे फेसबुक ग्रुप पे ना बीच बीच में, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मेरे को ना वो क्वेश्चंस जब मैं देखता था, ऑब्वियसली इन टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स का मैं भी अपने टाइम पे पार्ट था, तो मैं इन सब क्वेश्चंस के जब आंसर्स देखता था तो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील लाइक अरे यार इतना लोगों को इतना सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं सच बता रहा हूँ, आई यूज्ड टू फील कि पीपल व्हाई हाउ कैन पीपल नो अबाउट दिस आंसर, और हाउ कैन पीपल नो अबाउट दिस आंसर। एंड देन समबडी टोल्ड मी यार ये सब कुछ, इतनी सारी नॉलेज का कोई पॉइंट नहीं है, तेरी एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम दुनिया जहान के कहीं से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली ना, ये टफ होता क्वेश्चन। है कि इन मैरो एंड प्रेपलेडर क्वेश्चन बैंक, बोथ ऑफ देम, क्या होता है क्वेश्चन, मतलब आप अगर मैरो या प्रेपलेडर का किसी भी वीडियो देख के उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो यू वोंट बी एबल टू डू दैट, यू विल बी एबल टू सॉल्व 50 to 60%, इफ यू आर लकी 70-80% ओनली, बिकॉज इन क्वेश्चन बैंक दे कवर एवरीथिंग। ओके, तो मैं क्या करता था, जो क्वेश्चन बैंक मैं करता था, लेकिन मुझे ऑलरेडी पता था कि मतलब ये व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के टॉपिक्स वो इम्पोर्टेंट पीडीएफ टॉपिक क्या है, डाउनलोड किए हुए थे। हाँ, तो क्वेश्चन देख के मुझे पता चल, एट दैट पॉइंट इट वाज इन माय माइंड ओनली, देख के पता चल जाता था कि ये कहाँ से है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो क्वेश्चन देख के, किसी भी क्वेश्चन देख के मुझे इंस्टेंटली फीलिंग आती है, अच्छा दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट स्टडीड बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग दैट आई हैव स्टडीड बट आई फॉरगॉट नाउ, आई नीड टू आई रिवाइज। फॉरगॉट और एंड सम क्वेश्चंस की लगी ये तो नीट में कभी नहीं आएगा, तो कभी उसको डायरेक्ट इग्नोर ये ही कर देता, उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं पढ़ता था मैं, ये क्योंकि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज की है तूने एक्चुअली में ना। सो दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ, मैं जैसे अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि डिस्टिल डाउन करना है, ये डिस्टिलिंग डाउन है। अगर तुम्हें पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, या तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं, या जो व्हाटएवर इट इज, तो ये डिस्टिलिंग डाउन हो जाती है तुम्हारे क्यू बैंक और तुम्हारे वीडियोस दोनों की और तुम्हारे नोट्स की, कि ये चीज जो है ये तो कभी पूछी नहीं गई, तो इसको पढ़ना ही क्यों है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये चीज वो है जो मुझे आती है, बट मैं वीक हूँ, मैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर देता हूँ। और ये चीज वो है जो मुझे आती भी है, मैं ठीक भी हूँ, बट मैं भूल गया, तो आई शुड फोकस मोर ऑन कि मैं इसको रिवाइज कर पाऊँ एंड में। ये मेरे लिए वॉलेटाइल हो गई, जैसे यू सेड कि यू वांटेड टू रिवाइज द एंटायर फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज यू न्यू दैट इफ यू डोंट रिवाइज इट इन द लास्ट 3-4 days you will forget it, right? And they are very important subjects, so वो चीज हो जाती है। and I will wholeheartedly agree because मैंने भी ऐसे ही किया था, like मेरे लिए anatomy ऐसा सब्जेक्ट था, मेरे लिए फार्मा माइक्रो ऐसा नहीं था, बट मेरे लिए anatomy ऐसा था। तो मैंने आखिरी दिन बैठ के पूरी anatomy रिवाइज की थी, कि मैं भूल जाऊंगा नहीं तो, मैं अगर नहीं पढ़ के जाऊंगा एंड में anatomy, तो अगर एनाटमी नहीं पढ़ के जाऊंगा तो, और अगर मैंने आखिरी दिन पढ़ी एनाटमी, सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए, अगर नहीं पढ़ता तो कोई भी सही नहीं होता, है ना? आई थिंक यू विल आल्सो एग्री कि अगर तूने आखिरी 2-3 दिन में फार्मा या माइक्रो नहीं पढ़ी होती तो हो नहीं, सकता अगर है फनवार माइक्रो में तो मतलब मेरा वोलेटाइल था तो पढ़ के गया, हो गया एग्जाम में हो क्लियर। गया। सो आई विल नाउ, मतलब एक टाइप से आई विल फॉर माय द व्यूअर्स आई डिस्टिल डाउन व्हाट ही एसेंशियली डिड। उसने रैपिड रिवीजन को अपना वो बनाया, बेस बनाया, कि इसको तो मेरे को 5-6 में भी 7 बार रिवाइज करना है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स मेरे को इस चीज को रिवीजन करनी है, उसका बेस बना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही ऑलरेडी हैड अ लिस्ट ऑफ पीडीएफ एंड टॉपिक्स कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, so he knew ki what is important, what is not important, and this is available for free on Telegram, on YouTube, and things like that. Then he started to give his grand tests. Grand tests में wherever he found his weakness, Abdullah found his weakness, उसने वो चीज ऐड कर दी अपने रैपिड रिवीजन के नोट्स में। रिमेंबर, बेस अभी भी रैपिड रिवीजन के नोट्स ही रहे, तो अगली रिवीजन में भी रैपिड रिवीजन की फिर से रिवीजन हुई, तो उसने ऐड कर दिया कि अच्छा ये टॉपिक वीक था, ये मैं ऐड कर देता हूँ, ये टॉपिक ये था। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन वीक टॉपिक्स के लिए जो ये थोड़े बहुत थे, फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री में इजिली रिवाइजेबल, बायोकेमिस्ट्री या पैथोलॉजी में उसने थोड़ा फर्स्ट एड यूज कर लिया, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, सिस्टमिक पैथोलॉजी के लिए डॉक्टर प्रीति शर्मा के लेक्चर्स देख के उनसे नोट्स बना लिए, और क्या कहते हैं डॉक्टर निकिता ननवानी के न्यूरोनिक्स को यूज कर लिया। ऐसे करके टुवर्ड्स द एंड ही हैड अ रिसोर्स व्हिच देन ही अगेन कुड रिवाइज इन द लास्ट 1 month 2 times, एंड देन ऑब्वियसली तब भी न्यू कि फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इसकी वीक है, वो भी इसने ही मेड श्योर अपने हिसाब से प्लान किया कि मैं इसको आखिरी में रिवाइज करके आऊंगा। रिवीजन पूरे सिलेबस की अच्छे से की, उस रिवीजन को भी प्लान किया कि आखिरी में रिवाइज करके आऊंगा, एग्जाम दिया एंड गॉट अ वेरी गुड रैंक ऑफ 47। आई थिंक मैंने सब कुछ ठीक बोला, कुछ गलत तो नहीं बोला, राइट? या नहीं नहीं, है ना? अगर समराइज किया जाए तो ये स्ट्रैटेजी को तो यही होगा ना, रैपिड रिवीजन को बेस या बनाओ, या एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसमें चीजें ऐड करते रहो, ग्रांड टेस्ट से अपनी वीकनेसेस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम थोड़ा बहुत ऐड करके फिर बाद में उसी को पूरा रिवाइज करो, आखिरी हफ्ते में रिवाइज करो। आखिरी हफ्ते को भी ऐसे प्लान करो कि जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, फॉर योर लेट्स से इन योर केस इट वाज फार्मा एंड माइक्रो, इन माय केस इट वाज एनाटॉमी, उस पे ज्यादा फोकस करो, एग्जाम दो, ताकि एक्यूरेसी अच्छी हो, पता हो कि यार ये मैंने कल ही पढ़ा है,
ताकि वो दो क्वेश्चन में, दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कल पढ़ा है तो मैं आज सही आंसर मार्क करके आऊंगा, एंड देन यू गेट अ गुड रैंक। फ्रैंकली मैंने भी सिमिलर स्ट्रैटेजी, अब हम लोग ऑब्वियसली एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। आई वाज समवन हु वाज मतलब मैंने अपनी एमबीबीएस में थोड़ा डिसेंटली पढ़ाई की हुई थी, देयर विल बी अदर जिन्होंने नहीं की हो या जिन्होंने ज्यादा की हो, व्हाटएवर इट इज, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। बट you will realize, irrespective of a person being average, or irrespective of a person being topper, or irrespective of a person being below average, or whatever it is, हर बंदा एंड में एक चीज के ऊपर सही बोलेगा, एक चीज सबकी कॉमन रहेगी कि आखिरी तुम एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे, तुम ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो कि आखिरी 7 से 10 दिन के एग्जाम के पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। क्योंकि अगर आखिरी के 7 से 10 दिन में तुमने रिविजन नहीं की तो लाइक अब्दुल्ला सेड, वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, और वो एक्यूरेसी नहीं आएगी तो तुम एग्जाम में यू विल जस्ट फील कि ओ हाँ ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई लव हिज स्टेटमेंट कि फर्स्ट रीडिंग इज अ स्कैम एंड 2-3 रिविजंस आर अ लाई, because first reading and second reading will just give you an idea कि हाँ ये देखा देखा लग रहा है, बट वो जो accuracy चाहिए नहीं पीजी की, वो मल्टीपल रिविजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट 7 to 10 days रिविजन से ही आएगी, राइट? Last but definitely obviously not the least, question to you, what are your future plans? क्या किस ब्रांच में स्पेशलाइज करने का मन है और क्या है? मेरा एक्चुअली पहले से ही मन था रेडियोलॉजी। तो असम में एक्चुअली आई एम जनरल कैटेगरी, सो इन असम इफ यू गेट अ रैंक बिलो 10,000, ऑल इंडिया रैंक बिलो 10,000, तो मतलब हो जाता है, प्रीवियस ईयर्स में रेडियो हो जाता है। तो माय टारगेट वाज दैट ओनली कि आई नीड टू गेट अ रैंक बिलो 10,000। तो लेकिन थोड़ा अच्छा आ गया एक्चुअल एग्जाम में। You will get your desired branch, and may everyone wants the dream branch. You get the dream branch. So congratulations, Ebaidulla. And thank you so much. Video be let people get to realize through this video the importance of a resource which is revisable, and the importance of last 5 to 10 days revision. And में तुम कोई भी रैंक आए हो, चाहे वो रैंक 1 हो, चाहे रैंक 100 हो, 1000 हो, 3000 हो या 7000 हो, anyone who has got a decent enough a rank to get their desired branch and college, they will always talk about the fact कि बार बार रिविजन करना ज्यादा important है rather than कि vastness of resource पे focus करो. He took frankly एक अपने फ्रेंड से अलग वाला डिसीजन लिया कि यार मेरे से मारो नहीं हो पाएगा, मारो बहुत वास्ट है, मैं प्रेप लैडर करता हूँ. प्रेप, और इवन प्रेप लैडर में ही रियलाइज कि प्रेप लैडर भी कोई बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, वो भी डिसेंटली वास्ट है. मैं उसमें भी रैपिड रिवीजन पे फोकस करता हूँ कि मैं इसको रिवाइज कर पाऊंगा. सो रनिंग आफ्टर वास्ट रिसोर्सेज इज नॉट द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज टू फोकस ऑन सोर्सेज व्हिच आर वेरी वेरी रिवाइजेबल. बी प्रेप लैडर, रैपिड रिवीजन, और ही आल्सो यूज्ड फर्स्ट एड. अगेन पूरी फर्स्ट एड यूज नहीं की, बट ही रियलाइज कि मेरे को ये टॉपिक्स पता है, फर्स्ट एड में बहुत अच्छे से, बहुत इजीली रिवाइजेबल है, तो मेड देम हिज सोर्स. एंड अगेन कांग्रेचुलेशंस. एंड आई विल लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑन द ट्रैक कि यार जो मैं हर बार बोल रहा होता हूं अपनी वीडियोस में, you're not preparing for the exam, you're preparing to be able to revise in the last 10 days before the exam. अगर तो आखिरी के 10 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करके चले जाओगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी सही हो जाएगी. एंड लाइक एबादुल्ला सेड कि एग्जाम देते समय ना ये फीलिंग आनी चाहिए, अरे ये तो मैंने अभी भी पढ़ा है इसलिए मेरा आंसर सही हुआ है. वो फीलिंग आती रहेगी तो तुम्हारा एग्जाम सही हो जाएगा. नहीं आएगी तो ऑब्वियसली देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, यू वोंट मार्क द करेक्ट आंसर. Yeah, exactly. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. Maybe.